মানে ব্যাগেতেই ঠাকুররা ভাঙে, যার জন্য আমরা তাদের বলতে বাধ্য হয়েছি আমরা ভেতরে ঢুকবেন না। আরে বলতেও আমাদের খুব কষ্টও লাগে, কারণ মানুষ তো মানুষের মানুষকে আর ঢুকবেন না এই যে বললেই আমাদের অত্যন্ত সম্মান লাগে, কিন্তু কিছু করার থাকে না। Welcome back to my channel. Kumartuli, also called as Kumartoli, is a historic neighborhood in North Kolkata. It is world famous as the traditional Potters' Quarter. When I say world famous, I mean it also has an official Potter's Lane. The name itself comes from Kumor, Bengali pronunciation of Kumar, that is Potter. And Tuli or Toli is the locality or colony, literally meaning the Potters' locality. Like I just mentioned, it has an official Potters' Lane as well. দাদা এটা বানাচ্ছো, এই মডেলটা বানাচ্ছো? হচ্ছে না কেন? হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। For more than 3 centuries now, Kumartuli has been the creative heart of Kolkata's Durga Puja, which is the most famous festival of West Bengal. Almost all of the idols, Durga Ma's idol, Kali Ma's idol, Saraswati Ma's idol, and other deities, especially feminine forms, that are worshipped in Kolkata and exported across India and even abroad to places like US, UK, Canada, Japan, Australia, all of it are crafted here in Kumartuli. ये देखो लायन का फिनिशिंग देखो, इसका हेयर, इसका आईज, नीचे का जो मुंह का वर्क है, दांत का, यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे भी। Just look at the finishing, the expression, जो टंग में जो ट्वर्ल और कर्ल आए हुए हैं, टंग में, टीथ में, फिनिशिंग काम में कितना अच्छा है, जो सल आए हुए एक एक। This year, I imagined what it would be to walk through the narrow web of lanes of Kumartuli just weeks before Durga Puja. For the first time in my life, as I explored Kumartuli during pre-puja days, I experienced the special smell of wet clay and paint in the air. Lanes were lined with shops that had half-formed idols of gods and goddesses as the generations of skilled artisans continued to still work on them. The process is deeply meticulous and ritualistic. Let me explain. Everywhere you turn, you will find in these old shops itself that first, these artisans use the straw to erect a framework of the magnificent idol. Then the layers of clay from the nearby river Ganga, in this case Kumartuli Ghat, is put on it. It is then left to dry. However, notice how idol's face is covered to protect it from premature revealing of the face. This gesture has emotional and cultural significance. The clay work is followed by painting, decoration and dressing the idols in dazzling attires and jewelry. But Kumartuli today is not just a craft hub. It's a living heritage for the city, its people and the state. Families live and work in these studios, passing down techniques and secrets of idol making through centuries. It is also a symbol of Kolkata's identity today, where artistry, devotion and community all meet. During the weeks before Durga Puja, Kumartuli comes alive, drawing photographers, tourists and devotees alike who want to witness the making of the goddess before she is revealed in the pandals. Therefore, I too decided to go to Kumartuli, pay my visit. When I say pay my visit, I mean in literal sense, because we had to get a 100 rupee ticket to be able to shoot, rightfully so, and witness the grandiosity and the work that goes behind it all. এখন ধরেন এই মরার আগে কমপ্লিট করতেই হবে আমাদের, ওরা বাজে কথা। ওগুলা হচ্ছে আলাদা জিনিস ছিল, রাজবাড়ির পূজাতে সব ব্যাপার করা, ওগুলা গল্প। প্রাথমিক ডায়মন্ড হারবার থেকে আসে আঠা মাটি আর গঙ্গা থেকে ওঠে বালি মাছ, এই দুই মাটিতে কাজ হয়। আমাদের প্রচন্ড অসুবিধা হয়, কারণ ওই ফটোগ্রাফার আসে, ওদের পিটি ব্যাগ আর ব্যাগেতেই ঠাকুররা ভাঙে, যার জন্য আমরা তাদের বলতে বাধ্য হয়েছি আমরা ভেতরে ঢুকবেন না। আরে বলতেও আমাদের খুব কষ্টও লাগে, কারণ মানুষ তো মানুষের মানুষকে আর ঢুকবেন না এই যে বললেই আমাদের অত্যন্ত সম্মান লাগে, কিন্তু কিছু করার থাকে না। हवा में मिट्टी के खुशबू वाले इन्हीं कुमारटुली के गलियों में देवी खाली बनती नहीं है, पैदा होती हैं।
जो कुमोर्स या फिर आर्टिसंस हैं, उनका हर एक स्ट्रोक प्रॉमिस है माँ के अराइवल का। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे इन सब आर्टिसंस की और मेरी एक ही विनती है बस, जीवन में आप जब भी पूजा के पहले कुमारटुली का माहौल देखने आए तो इन आर्टिसंस को फोटो या बातचीत के लिए परेशान ना करें, क्योंकि बहुत रिस्की होता है इनके मेहनत से बनाए हुए मूर्ति के लिए, और क्योंकि ये बारीकी का काम है तो इनको डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। शुभो महालया 2025।